Hello dear students, you are all welcome to today's e-learning class in chemistry. Today we will be discussing about the alcohol in organic chemistry, part 3, the unfinished part. So before going to discuss about today's things, let's have a quick look into the previous class discussion, what we had discussed in the last class. Just refresh your memory. In the last class, we had discussed some physical properties and some chemical properties. Like in physical property, we had discussed that the lower members of alcohols are colorless liquids having characteristic alcoholic odor. And the liquids that exist up to C10 and beyond C10, they exist in a solid state because of a large molecular size, large mass and a higher van der Waals force of attraction. Then we discussed about the solubility. Lower members of alcohols are highly soluble in water in all proportions. It is because of they are capable of making hydrogen bonding with water. And the solubility gradually decreases as we go higher in the homologous series. And among isomeric alcohols, with increase in branching, the solubility gradually increases. Remember this one. Boiling point of alcohols are higher than corresponding alkanes, alkenes, alkyl halides, aldehydes and ketones of a comparable mass. It is because of existence of a intermolecular hydrogen bonding among the alcohol molecules. And boiling point gradually increases higher in the series, gradually increases. And among isomeric alcohols, the boiling point gradually decreases with increase in branching, because with increase in branching, molecule assumes spherical shape, minimum surface area, less van der Waals force of attraction. Then we discussed chemical properties. In chemical properties, we have discussed the first chemical property, that is reactions involving cleavage of O and H bond. It happens when alcohol behaves as a nucleophile. In all these reactions, we had seen that alcohols behave like weak acid. They are not acidic, they behave like a weak acid. And their acidic character is less than water except methyl alcohol. Remember this. And then its reactivity with diazomethane forms ether. Here H part participates. Then we discussed about the most important part of the reaction was reaction with the carboxylic acid, acidic chloride and acidic anhydride. In all these reactions, they form ester. Important thing is the OH part of a carboxylic acid. OH part of a carboxylic acid combines with the H of alcohol during esterification. So many times this has been asked in the examinations. Then we discussed our reactions involving cleavage of R and OH bond. Here we discussed about your reaction with the halogen acids, groups process, Lucas test, concentrated HCl and anhydrous zinc chloride in 1:1 ratio. Primary alcohol gives a primary alkyl chloride. Turbidity may or may not appear on heating the solution. Secondary alcohol gives secondary alkyl chloride. Turbidity appears after standing the solution for 5 minutes, and in case of tertiary alcohol, it gives you tertiary alkyl chloride. The cloudiness or turbidity appeared suddenly. So it was a distinction test. Then we discussed about reaction of alcohol with ammonia in presence of a dehydrating agent like alumina at 620 degrees Celsius. It produces a mixture of a primary amine, secondary amine and tertiary amine. This reaction was very important for examination point of view. Then at last we discussed another important reaction, reaction with the PCl5, PCl3 and SOCl2. In all these reactions, we saw that alcohols are converted to alkyl chlorides, and the most preferred reagent was your thionyl chloride. So today we will discuss the remaining chemical properties of alcohols. So these are the things to be discussed today. Reactions involving both R and OH group, dehydration, oxidation, next your catalytic dehydrogenation, haloform reactions, especially iodoform reactions, distinction between the primary, secondary and tertiary alcohol, very, very important. So many times it has been asked in the examinations. Some organic conversions and previous year questions. These are things we will discuss today. Okay?
So let us discuss about dehydration. First reaction is dehydration. What do you mean dehydration? आपने कहीं पे सुना होगा और आपने भी किसी को कहा होगा कि यार मेरा सुबह से 3-4 बार डिहाइड्रेशन हो गया, कल कुछ खाना वाना खा लिया बाहर से, पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब लूज मोशन हो गया। दैट मीन्स बॉडी लूजेस सम वाटर। अगर एक सिस्टम वाटर को लॉस करता है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कुछ फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव स्पेसिफिक सब्सटेंसेस दे कॉज डिहाइड्रेशन एंड द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर, सबसे पहले sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. Remember these reagents in organic chemistry. This is very very important to know the reagents. Which reagent does what? कौन सा reagent क्या कर रही है ये जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सबसे पहले आता है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी यूज किया जा सकता है जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हीटेड एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं और पोटेशियम बाइसल्फेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। लेट मी clearly explain all these things. This is very very important. So many times it has been asked in the examinations and this year it may be also asked in the examination. The dehydration of alcohol it depends upon, मैंने अभी कहा it depends upon nature of alcohol and temperature. देखिए इसका कमाल देखिए, पहला ऐसा है कि मैं देता हूं फर्स्ट at 160 degree Celsius. This is very important. If you take primary alcohol, this is your primary alcohol, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, let me write OH as here, OH, this is your H. So this is your primary alcohol. When you heat with the concentrated sulfuric acid, the OH and H they are eliminated as water and they give you alkene. They give you alkene. This is very important. So this is primary alcohol. If you take, for example, so many times this example, particular example has been asked, I can write ethyl alcohol. In organic reaction it is very important how to write the structure. This is ethyl alcohol. Ethyl alcohol on heating with the concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius gives you ethene. Gives you ethene. This was asked in 2020 CHEC annual examination. If you take propene, if you take propyl alcohol, similarly heat with a concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius, you will get propene. Remember these reactions. सिर्फ OH और H को जोड़ दो, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड डाल दो, बस तुम्हारा प्रोडक्ट यहां बन गया, ये रहा प्रोपीन. If you take butanol, if you take butanol, butanol, and you do the same reaction with the concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius, you will not only get but1Ne, but you will get but2ene. So this is a minor product and this is a major product. This is a major product. So the elimination follows here Sage-Jeph rule. According to Sage-Jeph rule, the more substituted alkene is the most preferred alkene and it will be produced in a large quantity. So this will be the measure. थोड़ा सा mechanism में करता हूं समझाने के लिए. It all follows carbocation. देखो, I am just doing this mechanism. CH3, CH2, CH2OH, sulfuric acid provides H plus, ठीक है, और एक ब्यूटानॉल ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा. So it produces
तुम्हारा ये बन गया CH2 CH2 OH2 plus. Then it loses that water molecule and a carbocation intermediate is formed. In dehydration, a carbocation intermediate, this is primary. So primary can be, मैंने एक क्लास में कहा था अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो इफ स्ट्रक्चर परमिट्स इट कैन बी कन्वर्टेड टू सेकेंडरी. यहां देखो ये प्राइमरी ऑन लेस स्टेबल, सो दिस इज लेस स्टेबल. ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सो दिस हाइड्रोजन विल मूव एज अ हाइड्राइडी. दिस इज कॉल्ड 1,2 शिफ्ट बिकॉज इट विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. दिस विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. So this is more stable. So these two carbocations will be formed, primary and secondary. When secondary loses a proton, here you see, when secondary loses a proton, it give you this product. So that means you get but2ene as major product. When this proton, when this hydrogen is eliminated, we get but1ene as minor product. So this is very important for your examination point of view. So this is what I explained in detail by writing the mechanism. Okay. Another important thing is if you do the same reaction with 140 degrees Celsius, this is very important. So many times it has been asked in the examination. If you do the reaction with alcohol, primary alcohol I am talking of, with a concentrated sulfuric acid at 140 degrees Celsius, 140 degree, then you will get ether. Then you will get ether. Same alcohol on heating with a concentrated sulfuric acid at 160 degrees Celsius gives you alkene. Same alcohol, primary alcohol, on heating with the same reagent at 140 degree will give you ether. So you can write like this. So 2RCH2 OH plus HOCH2 or you can combine this OHH and you can make this is the product. If you heat the same alcohol, देखो ये टेम्परेचर का कमाल है. If you heat the same alcohol with a concentrated H2SO4 at 110 degrees Celsius, you will get alkyl hydrogen sulfate. Sulfuric acid I can write like this, HOO SO3 SO2H. So the H and OH, the H and OH of this one alcohol H and another alcohol OH वो combine करके वाटर के रूप से निकल जाते हैं and we get alkyl bisulfate plus H2O. This alkyl bisulfate, if you heat to 140 degrees Celsius, if you heat this to 140 degrees Celsius, you will get ether. If you heat this to 140 degrees Celsius, you will get ether. And if you heat it to 160 degrees Celsius, 160 degrees Celsius, you will get alkene. This is very important. Next is your secondary and tertiary alcohols. You know secondary alcohol is more reactive than your primary, so they need some mild conditions like you see your this is your secondary alcohol. On heating with 85% sulfuric acid at 100 degrees Celsius, mild condition is required because it is more reactive. So it gives you alkene. So it gives you alkene. In case of tertiary alcohol, I am writing here RC, R, here I have taken CH3, so CH2H. This is so reactive, it only needs 25% H2SO4, very mild condition, and your the 80 degrees Celsius, it give you alkene. So it give you alkene. So this is very, very important. So in case of secondary tertiary alcohol, we do not need any drastic condition, but in case of primary alcohol, very important, temperature को थोड़ा ध्यान देना. Whenever you are asked what happens when ethyl alcohol is heated with a concentrated sulfuric acid, you have to look into the temperature. If it is asked at 160 degree, then you write alkene. If it is
temperature is given as 140 degree, then you must write ether. And in case of a secondary and tertiary alcohol, mild conditions are required. We don't need any drastic condition because reactivity order is tertiary greater than secondary greater than primary. ठीक है. So this is very very important reaction for examination point of view. उसको थोड़ा देख लेना और नोट भी बना लेना. ठीक है. Next we'll discuss about the oxidation reaction. Okay. This is very important. You just have a look into these reactions. Now we'll discuss about the remaining some important things about dehydration. देखिए concentrated sulfuric acid के साथ साथ मैंने बताया था हीटेड एल्यूमिना भी वही काम कर सकती है जो concentrated sulfuric acid कर रही है. You can also use heated alumina in place of a concentrated sulfuric acid for dehydration and also for etherification reaction. But difference is only on temperature. You just see when ethyl alcohol or any alcohol, primary alcohol, excess alcohol is heated with the alumina at 240 to 250 degrees Celsius, it give you ether. If you increase the temperature, same reactant, same reagent, if you increase the temperature, you get alkene. So मैंने यहाँ पे कुछ questions दिए हैं और you just try at home. I hope you can answer all these questions. Next important part of reaction is the oxidation reaction. You know, oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. So oxidations are normally carried out by oxidizing agents. So there are two classes of oxidizing agents: strong oxidizing agents, mild oxidizing agents. Remember which are strong oxidizing agents and which are weak or mild oxidizing agents. Acidified potassium permanganate solution or alkaline potassium permanganate solution, they are all strong oxidizing agents. Also chromic acid and a concentrated nitric acid, they are all strong oxidizing agents. Collins reagent, PCC, PDC, they are mild oxidizing agents. So let us discuss what these strong oxidizing agents do with the alcohol and what these mild oxidizing agents do with the alcohol one by one. So very important is when you use strong oxidizing agents like acidified potassium permanganate or acidified potassium dichromate or concentrated nitric acid, what happens to primary alcohol? This is very very important. This is the alpha oxidation. Alpha oxidation, this is OH, very important, CH. ये रहा तुम्हारा अल्कोहल का बेसिक स्ट्रक्चर. अल्फा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. सो ये द H ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एंड OH बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा. तो दे विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन and they will be eliminated as water. Here you will get this alcohol is now converted to कार्बोनिल कंपाउंड. ये बात याद रखना. जिसी कार्बन से OH ग्रुप अटैच हुआ है वो कार्बन बन जाएगा तुम्हारा कार्बोनिल. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम ले रहे हैं जैसे प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी अल्कोहल, इफ यू हीट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक योर potassium permanganate, you can take acidified potassium permanganate or alkaline potassium permanganate. So HH देखो और O, यहाँ से O आ गया, HH और O मिलके वाटर बना लिए, and then it will be eliminated as water and we get aldehyde compound. This is your aldehyde compound plus water. The aldehyde immediately undergo further oxidation to produce you the carboxylic acid. This is your carboxylic acid. Thing is that very important. What is important? If your alcohol contains, this is primary alcohol, if primary alcohol contains n number of carbon atoms, then aldehyde also contains n number of carbon atoms and carboxylic acid contains n number of carbon atoms. That means
देयर इज नो लॉस ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ एक जरूरी बात है, द रिएक्शन विल नेवर स्टॉप एट aldehyde stage, it will be ended at the carboxylic acid. So you will never get aldehyde in this reaction, you will get carboxylic acid at last. So many times questions has been asked in CHS examinations, why it is necessary to distill? It is distilled when you prepare aldehyde by oxidation of a primary alcohol. aldehyde को डिस्टिलेशन करके निकालना जरूरी है जब हम प्राइमरी अल्कोहल से aldehyde बनाना चाहते यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन और पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। क्या रीजन है ना? रीजन ऐसा है कि अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यू विल नॉट गेट रिएक्शन, विल नॉट स्टॉप एट aldehyde stage, you will get carboxylic acid. So therefore, whenever we are using the reagent and we are adding it to alcohol, immediately you set it to distillation so that whatever aldehyde is formed, it is distilled out. ठीक है? So carbon atom number remains same, it is a primary alcohol. So if carbon atom remains same, the alcohol is a primary, ये उसके पहचान है. If you take secondary alcohol, I am taking direct example here, direct example, isopropyl alcohol. This is isopropyl alcohol. So this is alpha hydrogen and the same oxidizing agent. So we get ketone. So we get ketone, means acetone. So acetone does not undergo further reaction easily under a drastic condition. Under a drastic condition, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोनिल और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है. वी गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड containing lower number of carbon atoms. So we get formic acid and acetic acid. So here if you have, so this is ketone, this is your secondary alcohol. So if a secondary alcohol contains n number of carbon atoms, ketone also contains n number of carbon atoms, but acid contains n minus number 1 of carbon atoms. अगर एक ही कार्बन कम होती है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे. ये इसकी पहचान है, उसकी कैरेक्टर है. इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, यू सी टर्शियरी अल्कोहल, in case of a tertiary alcohol, the reaction, oxidation reaction does not take place easily. Does not take place easily. In drastic condition, शुरू से ही उसको drastic condition यूज करना पड़ेगा. In case of in drastic condition, it gives the bond breaks. So here bond breaks, we get acetone. So acetone is formed via alkene. मीन्स यहाँ पे पहले अल्किन फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट अल्किन इज फॉर्म्ड, आइसोब्यूटेन इज फॉर्म्ड, देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव यू एसीटोन एंड फॉर्माल्डिहाइड. Formaldehyde and acetone under drastic condition, again on drastic condition oxidation, drastic condition, it gives you mixture of acetic acid. यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड. यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, इफ यू हैव n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हियर यू हैव n माइनस 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. एक कार्बन कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा 2 कार्बन एटम्स कम हो गया. So that means if 2 carbon atoms are lost or shot from original alcohol, then it is tertiary. If no carbon is lost during complete oxidation, it is primary. If 1 carbon is lost, it is secondary. If 2 carbon atoms are lost, it is tertiary. Here I want to say one important thing. When ketone undergoes further oxidation, ketone undergoes further oxidation, it undergoes further oxidation to give you mixture of carboxylic acid. If ketone is your unsymmetrical ketone, if it is acetone, there is no problem. You see, if it is acetone, if you do oxidation, bond यहाँ टूटेगा और यहाँ टूटेगा. सो यहाँ देखो, ये रहा CH3CO, और उसको कहा जाएगा कि तुम एक हाइड्रोजन उसको दे दो और ऑक्सीजन उसके अंदर में चला जाएगा, वो बन जाएगा एसिटिक एसिड. इसके पास रहेगा 2H CH2 और उसको 2 हाइड्रोजन हम दे देंगे, वो बनाएगा फॉर्मिक एसिड. ठीक है.
लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हो गया, एक ही साइड में कम कार्बन, दूसरे साइड में ज्यादा कार्बन है, बात यहां पे आती है ये CO किसी के साथ रहेगी तो मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो जिसके पास कम कार्बन है वो उसी के साथ वो CO रहेगी। मतलब जो जिस कार्बन से, जिस ग्रुप से ज्यादा कार्बन, वहीं से बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से अगर बॉन्ड टूट जाता है तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये रहा CH3CO। सो छोटे ग्रुप के साथ CO रहेगी और बड़े ग्रुप वहीं से जाएगी। तो ये उसको कहा जाए कि तुम एक H दे दो तो वहां बनेगा एसिटिक एसिड। इसके पास रहा H, CH3CH, उसको 2 H मिल जाए, 2 O मिल जाएगी, तो वो बनाएगी again acetic acid. That means we will get 2 molecules of acetic acid, and this is a rule called as a Popov's rule. Popov's rule. So this reaction, so this oxidation or cleavage of a ketone takes place according to a rule called Popov's rule in case of unsymmetrical ketone. ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल क्या क्या देते हैं। No carbon atom loss primary, 1 carbon atom loss secondary, 2 carbon atom loss tertiary, and Popov's rule. We have already discussed about the oxidation of a primary, secondary, and a tertiary alcohols using strong oxidizing agents. Remember this thing, once again I am telling, repeating this thing. Primary alcohol gives you carboxylic acid, secondary alcohol gives you carboxylic acid containing 1 carbon atom less, tertiary alcohol gives you 2 carbon atom less. ठीक है। If you want to stop the reaction at aldehyde or ketonic stage, we don't want the complete oxidation of alcohols, then we have to use some mild oxidizing agents. Remember these 3 mild oxidizing agents like Collins reagent. You know the Collins reagent is a complex of pyridine with a chromium oxide. PCC, pyridinium chlorochromate, PDC. You just write primary alcohol, PCC or PDC or your Collins reagent, you will get aldehyde. Reaction will not proceed further. In case of secondary alcohol, a reaction will proceed up to ketone. Ketone will not further undergo any kind of oxidation because this oxidizing agent is not sufficient or is not strong enough. Tertiary alcohol does not respond to this test. So mild oxidizing agent only oxidize primary alcohol to aldehyde, secondary to ketone, and does not do anything with your tertiary alcohol. Right? Another very important reaction is catalytic dehydrogenation. What is catalytic dehydrogenation? Means by using a catalyst, we will remove the hydrogen. It is a kind of oxidation, loss of hydrogen, but we will not call it oxidation because we are not using any oxidizing agent. Right? So similarly, when the primary alcohol is heated with the dehydrogenating agent. What is the dehydrogenating agent here? Remember copper, and you have to heat at 300 degrees Celsius. Very important, so many times it has been asked in all kinds of examinations. Primary alcohol RCH2OH, this is also kind of alpha oxidation. OH, H from O and a H from alpha carbon is lost as H2, we get CO, RCOH. Reaction will stop there. Similarly, you just write like oxidation reaction as I had already discussed. You just write secondary alcohol, O का H, alpha carbon का H हटा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो, वो बन गया तुम्हारा. Tertiary alcohol on heating with reduced copper at 300 degrees Celsius do not undergo dehydrogenation, rather it undergoes dehydration because it is more reactive. So it gives you alkene. Remember, primary alcohol on heating with reduced copper at 300 degrees Celsius give you aldehyde containing same number of carbon atom. Secondary alcohol on heating with reduced copper at 300 degrees Celsius give you ketone containing same number of carbon atom. In case of tertiary, it give you alkene. So this is also distinction test. Okay? Next, we will go to discuss about another important reaction, haloform reaction, but in specifically we will discuss here iodoform reaction. This is a very, very important reaction. This reaction you will also learn in aldehydes and ketone chapter. I am just giving you clue what type of alcohols show iodoform test and what type of ketones show iodoform test. Very important. The alcohols having, remember this one, having this part
एनी अल्कोहल हैविंग दिस यूनिट ये अल्कोहल के पास होना जरूरी है. दिस इज फॉर अल्कोहल. ठीक है. You can take here CH3, not R, CH3. This part must be present in case of a alcohol to show iodoform test. You can put R here. So R can be H. If you take R equal to H, then it is ethyl alcohol. If you take R equal to CH3, then it becomes your isopropyl alcohol. If you take R equal to C2H5, then it becomes alkan 2-ol. So all alkan 2-ol, not 1-ol, all alkan 2-ols, they show iodoform test. And in case of aldehydes and ketones, they must have to have CH3CO system. Methyl ketone उनके पास होना जरूरी है. So this part we will not discuss because we are dealing with alcohols. So all alkan 2-ols except ethyl alcohol, they also iodoform test. So what is that iodoform test? When you take, so many times it has been asked in the examination, what happens when ethyl alcohol is treated with iodine and alkali solution. So this is your 4I2 plus 6NaOH, or you can take KOH. Remember, this part forms your iodoform. We get CHI3. Again, you have only one carbon, so this will give you sodium formate. This is iodoform yellow color. This is your antiseptic. And you can get sodium iodide and also water. So this is important reaction. Very important. Only this type of alcohol, second carbon के पास OH होना जरूरी. So that means methyl alcohol will not show this test. Propyl alcohol will not show this test because you see propyl alcohol CH2 CH2OH, because it on oxidation it will give you प्रोपियोनाल्डिहाइड. सो दिस इज द डिस्टिंक्शन टेस्ट. कई बार भी पूछा गया क्वेश्चन CHEC में, गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल. दिस इज द टेस्ट. इथाइल अल्कोहल रेस्पॉन्ड्स टू iodoform टेस्ट, मिथाइल अल्कोहल डज नॉट रेस्पॉन्ड टू iodoform टेस्ट. नेक्स्ट we will discuss about how to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. What are the chemical tests? कई बार एग्जाम में पूछा गया है. सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary alcohol. There are 4 methods. We have already discussed 3 methods. Now I will discuss about the most important method, that is Victor-Meyer's test, and this Victor-Meyer's test is otherwise called as RBC test. It is otherwise called as RBC test. Remember RBC, what is its full form? R stands for red, B stands for blue, and C stands for colorless. RBC test. Remember RBC test. So this is your it is a series of reaction, sequence of reaction. याद रखना उसमें 4 reagents हमको डालना है. 4 reagents sequential 1 by 1. सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है. पहले क्या reagent डालना है? फर्स्ट तुमको डालना है रेड फास्फोरस और आयोडीन. सेकेंड में डालना है तुमको सिल्वर नाइट्राइट. रिमेंबर दिस रिएजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड में डालना है तुमको नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड तो ऐसे मिलता ही नहीं, तो उसके लिए तुमको डालना पड़ेगा सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. फोर्थ में डालना पड़ेगा तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड. ये 4 रिएजेंट तुमको डालना पड़ेगा 1 by 1. देखो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, पहला रिएजेंट मैंने दे दिया रेड फास्फोरस आयोडीन. क्या बन जाता है तुम्हारा RCH2I. इट मेक्स इट कन्वर्ट्स OH टू आयोडाइड. देन यू ऐड AgNO2. क्या बनेगा यहाँ पे RCH2NO2 नाइट्रो अल्केन. देन यू ऐड नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड में इसी तरह लिखता हूँ N डबल बॉन्ड OH.
क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस या रिएक्टिव हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने N और डबल बॉन्ड O को इसी साइड में लिख दिया ताकि H2O बनेगा। तो तुम्हारा यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड N OH, उसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इट इज एसिडिक। अगर तुम डाल दिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे H हट जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड NONA, और ये कलर आ गया ब्लड रेड कलर, RBC ब्लड रेड कलर। ठीक है। इफ यू आर गिवन विथ सेकेंडरी अल्कोहल, यू सी, देन यू आर रेड फास्फोरस आयोडीन, फास्फोरस आयोडीन, ये बनेगा तुम्हारा आयोडाइड। देन यू आर सिल्वर नाइट्राइट, एक ही के बाद एक सीरियली डालना है, हमको मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोअल्केन, और यहाँ पे डालना, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि नाइट्रस एसिड जब हम डालते हैं कि किसी तरह लिखना है, यहाँ पे OH और N डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए OH में इसी तरह को इसी साइड को घुमा दिया ताकि H OH मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये बन गया तुम्हारा सीडो नाइट्रोल, उसको कहते हैं सीडो नाइट्रोल, सीडो नाइट्रोल। और इससे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ये बनेगा तुम्हारा ब्लड, बनेगा ब्लू कलर, RBC। अगर टर्शियरी अल्कोहल ले लिया तुमने, टर्शियरी अल्कोहल, तो पहले वो बनाएगा तुम्हारा आयोडाइड, नेक्स्ट बनेगा तुम्हारा नाइट्रोअल्केन, और उसके बाद तुमने दे दिया नाइट्रस एसिडी, नो रिएक्शन। देन यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन नो रिएक्शन, कलरलेस प्रोडक्ट। आई बात समझ में? बस एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना। ये 3 मार्क का क्वेश्चन से पूछा जाता है या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरियली एक ही के बाद एक ही रिएजेंट ऐड करना। पहले क्या है, रेड फास्फोरस आयोडीन, उसके बाद क्या है, सिल्वर नाइट्राइट, नेक्स्ट नाइट्रस एसिडी, और उसके जगह में सोडियम नाइट्राइट HCl, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। जिस टेस्ट में, मान लो तुमको तीनों टेस्ट में तीनों अल्कोहल दिया गया, पता नहीं कौन से टेस्ट में कौन सी अल्कोहल है, ये पूछा गया कि टेस्ट करके बताओ कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, ये 4 रिएजेंट डाल दो। जिस टेस्ट में कलर दिखाई देगा रेड कलर, वो प्राइमरी है, जिसमें कलर दिखाई देगा ब्लू वो सेकेंडरी, जिसमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा वो बनेगा तुम्हारा टर्शियरी। ठीक है। ये रहा तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरी बात, जो लुकास टेस्ट में और उसको रिपीट कर देता हूं, लुकास रिएजेंट इज योर anhydrous zinc chloride and a concentrated HCl, mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl in 1:1, so that is called Lucas reagent. By using Lucas test reagents, you can also distinguish between primary, secondary, and tertiary alcohol. As primary alcohol on reaction with the Lucas reagent gives you primary alkyl chloride. Turbidity may or may not appear on heating. अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, वो प्राइमरी का कैरेक्टर है। Secondary alcohol give you secondary alkyl chloride. Turbidity will appear after 5 minutes or on standing the solution for some time. In case of tertiary, turbidity appears suddenly, right? Next is by oxidation reaction, you can also distinguish between primary, secondary, tertiary. I have already discussed by using acidified potassium permanganate or alkaline potassium permanganate or acidified potassium dicarbonate solution, that primary alcohol gives you carboxylic acid containing same number of carbon atoms. Remember this one. In case of a secondary alcohol, it gives you ketone. Ketone under drastic condition, in drastic condition, it undergoes further oxidation according to Popov's rule, give you carboxylic acid containing less number of carbon atoms, 1 carbon तो कम से कम होगा ही होगा. In case of a tertiary alcohol, it is stable, do not undergo oxidation easily, but under drastic condition it gives you ketone containing 1 carbon atom, and ketone under Popov's rule under drastic condition oxidation produces carboxylic acid containing further less number of carbon atoms, कम से कम 2 कार्बन अगर लेस हो गया, अल्कोहल और एसिड के बीच में 2 कार्बन आटम अगर लॉस हो गया है तो मान लो ये टर्शियरी ही है. और एक टेस्ट भी मैं बता देता हूं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है. प्राइमरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ रिड्यूस्ड कॉपर गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल गिव यू अल्किन. यहां डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, यहां तुम्हारा बनता है अल्किन.
ठीक है. So this is very important. Next parts will discuss about interconversion of alcohols. So interconversion of alcohol, so many times it has been asked in the examination, how will you convert methyl alcohol to ethyl alcohol and ethyl alcohol to methyl alcohol. Let us watch. मैं अभी एक कन्वर्सन बनाने जा रहा हूं, तो ये रिएक्शन को ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CHSE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल. हम मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल से कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, देखो पहले सीक्वेंस देखो. पहले उसको क्या करेंगे ना, SOCl2 दे दो. एक कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं. SOCl2 दे दो. PCl5 PCl3 यूज कर सकते हो, लेकिन SOCl2 दे दो. CH3Cl बन गया, यहाँ SO2 चला गया. ठीक है. देन यू ऐड पोटेशियम साइनाइड. यू मस्ट हैव रेड इन halo alkane. So KCl goes out, CN is attached, you get methyl cyanide. Then you do the reduction, lithium aluminum hydride, you will get ethylamine. So you get ethylamine. Okay. C triple bond N, here you have triple bond N. So 4 hydrogen atoms, 4 nascent hydrogen comes, so it gives you ethylamine. Then ethylamine on reaction with the nitrous acid HNO2. ठीक है. So I have already told so many times, इसी reagent का काम है, it will convert NH2 to OH. सीधी से आ गया. So this is methyl chloride. So this is methyl chloride. This is methyl cyanide, ethylamine, and ethyl alcohol. This is one method. Remember, in this way you can increase the number of carbon atoms. ठीक है. This is one method how you can convert methyl alcohol to ethyl alcohol. So this is your methyl alcohol and this is your ethyl alcohol. So this is very convenient method. In organic reaction ये बहुत ही funny है. It is just like mathematics. You can have also different processes. Like आपको तो यहाँ आना ही पड़ेगा, यहाँ तो आना ही पड़ेगा. So important is you just convert to methyl chloride. You convert it to alkyl chloride. यहाँ आप क्या कर सकते हैं देखिए. और एक बात दूसरा भी वो है, you can convert. You just do hydrolysis. Do the complete hydrolysis. You know, cyanide upon complete hydrolysis give you acetic acid. तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसी रास्ते में जाएंगे. So this is your acetic acid. नहीं यहीं से लिखिए, ठीक है. So just do the hydrolysis, you will get acetic acid. Okay, ठीक है. And acetic acid on complete reduction with the lithium aluminum hydride, because it is such a beautiful reducing agent, it can reduce acid to direct alcohol, because you have already 2 carbon atoms and this is here also you have 2 carbon atoms. So carboxylic acid can be directly converted to ethyl alcohol. So you can go in this way. कोई पहले लिख सकता है SOCl2, CH3Cl, KCN, methyl cyanide, hydrolysis, acetic acid, then you can go to ethyl alcohol by doing reduction with lithium aluminum. Or you can also go in this way, do the reduction, you get ethylamine, then use nitrous acid. So this is the best method. There are best method of a conversion of a methyl alcohol to ethyl alcohol. There are 2 ways I have already discussed. Let us do the reverse process. So reverse process means how you convert ethyl alcohol to methyl alcohol. Ethyl alcohol to methyl alcohol means you have to cut 1 carbon atom. हमको एक कार्बन आटम काटना है. तो क्या करेंगे उसको, पहला अभी मैंने बताया था, डू द ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो, तो यू विल गेट बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन acidified. So you will get, there are 2 carbon groups here, so you will get acetic acid because it contains same number of carbon atoms. Last तो acid ही मिलेगा. ठीक है. Here there are 2 ways. One way you can
react with ammonia, it is acid, this is base, you will get ammonium acetate, right? This is your ammonium acetate. Then you do just heat it. On heating, water molecule will be lost. Here there are 4H, 2H will combine with O, it will be lost as water and you will get amide. You will get acetamide, right? So this is your acetamide and this is your water is lost here. And amide, you just do the reaction. One reaction is called Hofmann's bromamide reaction. It is bromine and a potassium hydroxide or alkali solution of bromine. This is called most famous reaction Hofmann's bromamide reaction. So it will give you, this is CO will be cut. ये हट जाएगा तो मिथाइल के साथ NH2 यहीं से एक कार्बन कटता है. हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन इज देयरफॉर कॉल्ड एज डिग्रेडेशन रिएक्शन. यहीं पे एक कार्बन घटेगा तो ये रहा एक. सो यू गेट मिथाइल amine, right? Then methyl amine, you know, the best method to convert amine to alcohol is you use nitrous acid. हो गया, बात खत्म. ठीक है. सेकेंड प्रोसेस भी हम जा सकते हैं. यहां देखो, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है. ये रहा एसिड, ये रहा बेस, तुमको मिलेगा सॉल्ट, राइट, सोडियम एसीटेट. Then heat it with soda lime, sodium hydroxide and a calcium oxide, equimolar mixture of sodium hydroxide and calcium oxide, just heat it. You know, it will give you methane. इसी से तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बनेगा. तो यहाँ मिला तुमको मीथेन, ठीक है. और मीथेन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीनेशन कर दो, लिमिटेड क्लोरीन 1:1 रेशियो, सनलाइट डाल दो, तुम्हारा मिल जाएगा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड. देन ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे डाल दो, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और KOH डाल दो, हो गया, बात खत्म. ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी रिपीट होने का बहुत ही संभावना है. रिमेंबर दिस थिंग्स. कन्वर्सन मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल टू methyl alcohol and vice versa. So many times this has been asked in examinations, CHS examinations. आज मैंने जो पढ़ाया ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन और ये जो डिस्टिंक्शन, ये कन्वर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रहा, मान लीजिए कि इससे तो जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है, ठीक है. तो ये रहा इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल. नाउ लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट. What are the long questions or short question that has been asked in CHS? देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया था. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल with the equation explain how does ethyl alcohol reacts with the acidified potassium dichromate solution phosphorus pentachloride. क्या होगा आंसर, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल. 4 मेथड मैंने बताया. लिखना क्या है, विक्टर मेयर्स लिखो या लुकास टेस्ट लिख दो, बस मिल जाएगा नंबर. और रहा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, इथाइल अल्कोहल उसके साथ क्या बनाती है, ये रहा तुम्हारा एसिटिक एसिड बनेगा भैया, एसिटाल्डिहाइड. फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड साथ जब मिलता है तो बनाता है ये इथाइल क्लोराइड. सो व्हेन इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म्स ethyl chloride. This question was asked in 2018. Long question. What is the Grignard's reagent? Alkali magnesium halide is called as Grignard's reagent. How can you prepare primary, secondary, tertiary? I have already discussed. Formaldehyde Grignard's reagent, hydrolysis primary alcohol. Other aldehyde Grignard's reagent, hydrolysis gives you secondary alcohol, and your ketone Grignard's reagent followed by hydrolysis give you tertiary alcohol. What is Lucas test? Already I have discussed. Equimolar mixture of a continuous cell and anhydrogen chloride used to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohol. Primary alcohol gives you primary alkyl chloride, turbidity may or may not appear. Secondary gives you secondary alkyl chloride, turbidity appears on 5 minutes, after 5 minutes on long standing, or tertiary gives you alcohol gives you turbidity suddenly. ठीक है. Next, esterification does not take place between ethyl alcohol and sulfuric acid at 170 में इथाइल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड साथ मिलके इलिमिनेशन रिएक्शन करती है और अल्कीन बनाते हैं. और एट 140 डिग्री सेल्सियस, मैंने पहले कहा था 140 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टेम्परेचर याद रखना. एट 140 इट प्रोड्यूसेस ईथर.
Etherification cannot take place at 170. Elimination reaction takes place at 170. How can you convert ethyl alcohol to ethene? Just by heating with a concentrated sulfuric acid. When ethyl alcohol is heated with a concentrated sulfuric acid or phosphoric acid or heated alumina, you can get ethene at 170 degree. अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो 170 डिग्री और अलुमिना लिखना है तो 350 लिखना है. व्हाट हैपेंस इथाइल अल्कोहल इज हीटेड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 160 डिग्री. बस ऑलरेडी डिस्कस्ड. 2020 में ही पूछा गया था. फाइनली राइट ए नोट ऑन विक्टर मेयर्स मेथड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ अ डिफरेंट क्लास ऑफ अल्कोहल्स. अभी मैंने बताया. तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लासेस हैं, मैंने जो 3 क्लास में अल्कोहल आपका जो तीनों क्लास लिया है, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स थॉरोली और सारी की सारी बात आपकी समझ में आ चुका होगा. आई एम होपफुल दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सम क्वेश्चंस मैंने दिया है और घर में भी आपके पास जो भी किताब है, जो भी किताब बीके केमिस्ट्री भी है और आपके पास कई सारी किताब है मार्केट में मिलते हैं, उससे भी करो और जो भी डाउट है अपने टीचर के साथ डिस्कशन करो. सो यू ऑल हैव अटेंडेड द क्लास thoroughly, clearly and must have clearly understood the terms, the facts, the fundamentals, and I am hopeful that today's class will be very much useful for you. Thank you all. Thank you for attending the class and sitting before the television till the end. Thank you. Thank you all.